Muscular system. So muscular system, it is formed of muscular tissue. So what is a muscular tissue? बेटा पहले ध्यान से समझो. It is a muscle. So if you see, अगर ये आर्म है तो then if you remember, कल हमने ये मसल देखा था एक बाइसेप्स, और इस साइड पे हो जाता है ट्राइसेप्स. When we fold the arm, this muscle contract. When we extend the arm, this muscle contract. So this is a muscle. Muscle is a tissue. Muscle is formed of, each muscle has many bundles of muscle fibers. So what is muscle fiber? It is a muscle cell. Muscle fiber is a muscle cell. Muscle is a tissue. Tissue is formed of many cells. So muscle fiber is a cell. And if we cut its transverse section, इस तरह से अगर हम transverse section इसका काटेंगे, this is a muscle which has many bundles of muscle fibers. This is a muscle fiber. This is a muscle fiber. This is epimysium. What is epimysium? Connective tissue sheath around muscle. Connective tissue sheath around muscle, that is epimysium. This is bundle of muscle fibers. पूरा लिखना है आपने, connective tissue muscle fibers. It is surrounded by, this sheath is called as perimysium. Connective tissue sheath. Then inside, what is this? This is a muscle fiber, right? This is actually a muscle cell having nucleus. So this is muscle fiber or muscle cell, right? This muscle fiber, if this is muscle fiber, it is formed of, this is muscle fiber, it is formed of many myofibrils.
thread-like structures. This is muscle fiber. This is nucleus. This is all cytoplasm. So this is myofibrils. Each muscle fiber formed of many myofibrils, thread-like structures. Then each myofibril is formed of myofilaments. These are myofilaments. This is thick myofilament, and this is thin myofilament. Again, I am telling you, muscle is a tissue formed of many cells. These cells are called as muscle fibers. Each muscle fiber is formed of thread-like structures called as, क्या बोलते हैं इनको? These are called as myofibrils, and each myofibril is formed of myofilaments. Is it okay? ठीक है? एक सेल में बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स है, और वो थ्रेड किसके बने हुए हैं? मायोफिलामेंट्स के बने हुए हैं. ठीक, बना लो ये. बेटा तुम्हारा स्कूल 4th से शुरू होना है कि 3rd से शुरू होना है? 4th से. 3rd को पीटीएम है. ओके. बना लिया बेटा? So write down about muscle fiber. Muscle fiber is surrounded by plasma membrane or sarcolemma.
or sarcolemma. What is sarcolemma? Plasma membrane plus connective tissue sheath. Plasma membrane plus connective tissue sheath, that is sarcolemma. Right? So plasma membrane or sarcolemma. The cytoplasm of muscle fiber is called as sarcoplasm. Muscle fibers can be uninucleated or multinucleated. Muscle fibers can be uninucleated or multinucleated. They have endoplasmic reticulum or sarcoplasmic reticulum. Which is the storehouse of calcium required for muscle contraction. Muscle fibers consists of thread-like structures, myofibrils, which are contractile and are formed of myofilaments. Which are contractile and are formed of myofilaments. Reserve food in muscle fibers is glycogen. Sarcoplasm has abundant ions such as potassium ions, sodium ions, phosphate ions, calcium ions, etc. Potassium is the most abundant. Potassium is the most abundant ion. So this is the structure of muscle fiber. Then we come to type of muscle fibers. Three types of muscle fibers are there.
types of muscle fibers, that is striated or striped or voluntary muscle fibers. Then second is unstriated or smooth or visceral or involuntary. बेटा इनको स्केलेटल भी बोलते हैं. striated का these are also called as. And the third type is cardiac muscle fibers. Another is cardiac muscle fibers. ठीक है, तो फर्स्ट इस पे आ जाइए. ये सब स्ट्राइप्ड है या स्ट्राइटेड है. ये है थिक मायोफिलामेंट्स. Then thin myofilaments. अगर आप बेटा इनको, ये तो मैंने आपको बहुत बड़ा करके दिखा दिया, अदरवाइज इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा सा, चलो मैं इसको और बड़ा करके दिखा देती हूँ. So they will appear as this is dark band, this is light band. और इसको थोड़ा सा और अगर हम छोटा करके देखें, लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, इट इज स्ट्राइप्ड. स्ट्राइएशंस होती है ना, कपड़ों में भी होती है ना, ब्लैक ब्लैक धारियां होती है. ठीक है, मोटी मोटी सी, दैट आर स्ट्राइप्स.
ठीक है, ज्यादा हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा. सो दिस इज डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड. इन द लाइट बैंड देयर इज प्रेजेंट zigzag line. In the dark band, ये इसको बोलते हैं Z line. This region is called as H zone. ये वाला जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है. H जोन और H जोन के बीचों बीच एक पतली सी लाइन जाती है. दिस इज M लाइन. H zone and it has a thin fibrous line called as M line. और Z line के adjacent ही this is T tubule. Adjacent to Z line is present T tubule. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जहां पे थिक फिलामेंट है दिस इज डार्क बैंड, और जहां पे थिक फिलामेंट नहीं है यहां से यहां तक दिस इज लाइट बैंड. थोड़ा सा बड़ा करके बना लो. बना लिए बच्चों? So write down striated. These are striated or striped. These are striated or striped because they have
because they have alternate light and dark bands. They have alternate light and dark bands. Second point, because they are controlled by our own will. Because they are controlled by our own will. Therefore, these are called as voluntary muscles या muscle fibers. They are called as voluntary muscle fibers. And third point, they are connected with the bones. They are connected with the bones and thus called as skeletal muscle fibers. Thus called as skeletal muscle fibers. ठीक है? They are multinucleated. They are multinucleated. Next है, they are covered by sarcolemma. They are covered by sarcolemma. Next है, they store oxygen in a red pigment called as myoglobin. और बेटा डिफरेंट टाइप के जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है उनमें डिफरेंट अमाउंट है मायोग्लोबिन का. ठीक, तो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है. सो बेस्ड ऑन you can write down types of skeletal muscle fibers. Based on amount of myoglobin. Types of skeletal muscle fibers based on amount of myoglobin. These are of two types. Which two types? That is red muscle fibers and white muscle fibers. As the name indicates, red muscle fibers, abundant myoglobin, and it has less myoglobin. It has abundant mitochondria which provides energy. They have few mitochondria. But opposite to it is few sarcoplasmic reticulum, means endoplasmic reticulum. They have abundant endoplasmic reticulum. जो red muscle fibers है, they contract slowly. But remain contracted for a long time.
धीरे करते हैं, बट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. Whereas they contract quickly. They contract and relax quickly. For example, muscles of eyelids. Am I right? So these contract. आप आंखें झपकाते हो कि नहीं फटाफट से? झपकाते हो, खोलते हो, झपकाते हो, खोलते हो, राइट और नॉट? ठीक है. Whereas red muscle fibers, the muscles of our back, जो हमारी पीठ के मसल्स है, दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहते हैं, कभी भी वो रिलैक्स्ड नहीं है. क्योंकि जिस दिन भी हमारे बैक के मसल्स रिलैक्स हो गए, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? लिम्प हो जाएगी. हमारी कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगी. जब हम सोते हैं तो क्या हमारी बॉडी कहीं को भी मुड़ जाती है? नहीं, तब भी उसकी एक स्पेसिफिक शेप है. ठीक है ना? सो दैट शेप इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अवर मसल्स ऑफ अवर बैक, राइट? सो दे रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम. बट होता क्या है? देयर आर मेनी सेट्स ऑफ बैक मसल्स. पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर ये रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये रिलैक्स. सो ओवरऑल जो है हमारे बैक के मसल्स वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहते हैं. ठीक है. सो दीज आर रेड मसल फाइबर्स, दीज आर व्हाइट मसल फाइबर्स. ओके, डन? लिख लिया आपने? ठीक है जी. देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट हम फटाफट से स्मूथ मसल फाइबर्स. Covered by plasma membrane only. Covered by sarcolemma नहीं है. Covered by plasma membrane only. They have tapering ends या pointed ends. इस तरह से है. They have tapering or pointed ends. They are uninucleated. Single nucleus. No dark and light bands. There are no dark and light bands. Thus smooth or unstriped. They are connected with the visceral organs. हमारी बॉडी के जो organs है अंदर, they are connected with the visceral organs. And their movement is not controlled by our will. Their movement are not controlled by our will, thus called as involuntary. ठीक है जी. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल फाइबर्स. Cardiac muscle fibers. Poorly developed striations. Uninucleated. Branched. The lateral branches which connect muscle fibers are called as oblique bridges. These are called as
oblique bridges, the adjacent muscle fibers have the specialized membrane called as booster discs or intercalated discs. Which helps in quick spread of the stimulus. ये देखो बेटा, एक बार ध्यान से देखो, ये कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट. एक और पॉइंट लिख लो, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो, ये एडजेसेंट मसल फाइबर्स है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में ये मेम्ब्रेन है स्पेशलाइज्ड, जिसको हम कह देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और ये लेटरल ब्रांचेस है जो आसपास के मसल फाइबर्स को भी जोड़ती है. दीज आर कॉल्ड एज ओब्लीक ब्रिजेस. और ये पुअरली डेवलप्ड है. जो ये बैंड्स है ना, डार्क बैंड्स जो है, दीज आर पुअरली डेवलप्ड बैंड्स. ये जो है, these are poorly developed bands. ठीक है बेटा, so these are cardiac muscle fibers. ठीक है जी, आज हम यहां तक करें. ठीक है, so next time we will do ultra structure of the skeletal muscle fiber. ठीक है, next time we will complete this chapter. Monday is also your holiday, right? छुट्टी है ना, कि स्कूल लग जाना है? छुट्टी है ना, तो आई होप सेम टाइम रहेगा, या मैं फिर भी आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगी. ठीक है जी, ये कर लो.